Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 2nd of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. In this video, students, we will be talking about Bhupendra Yadav, who have released the MEE report for 2020 to 2025 for 438 protected areas, where Kerala and Chandigarh has secured the top position. We will be discussing about it. Then we will be talking about Tejbir Singh, who became the world's youngest to climb the summit of Mount Elbrus. Next thing, Ministry of Youth Affairs and Sport and DIC has signed an MOU. We will be discussing about it, and many other news will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. That is quite important for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. Bhupendra Yadav has released the MEE report for 2020 to 2025. What is MEE? Management Effectiveness Evaluation Report. This report is covering 438 protected areas. Take a note of this. That includes your national parks, wildlife sanctuaries that are in India. This report has been prepared by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and it was launched during the India Conservation Conference, that is ICCON, that was held in 2025 at the Wildlife Institute of India in Dehradun, Uttarakhand. Correct. In this, Kerala has secured the top position, right, achieving a score of 76.22% and becoming the only state that was rated very good. So coming back, Bhupendra Yadav released this MEE report. This report was prepared by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and this report is talking for the area time period 2020 to 2025, and 438 protected areas, that includes your national park and wildlife sanctuaries, has been included here. Take a note of this. Then if we are talking about union territories, it is Chandigarh that has secured the top position. And if we are talking about the individuals protected areas, Eraviculam, that is in Kerala, right, and Dhachigam National Park, that is in Jammu and Kashmir, they have achieved the highest score, right. Then as we discussed, this convention was held at the Wildlife Institute of India in Dehradun, Uttarakhand. Who is the director here of Wildlife Institute of India? Virendra R. Tiwari. Correct. Then if we talk about this MEE, it is a systematic evaluation tool based on the International Union for the Conservation of Nature's World Commission on Protected Areas framework that assess how well protected these national parks and wildlife sanctuaries are and how administered and conserved they are. This was introduced in 2006. Right, take a note of it. And here you can see Kerala outperformed here in all the states, and among the individuals, Ervakulam of Kerala and Dhachigam National Park of Jammu and Kashmir achieved the highest score. Next is Tejbir Singh became the world's youngest to climb the summit of Mount Elbrus. Take a note of this. Tejbir Singh, as you can see him in the picture, he is just 6 years and 9 months old, and he became the youngest ever to climb this Mount Elbrus. This Mount Elbrus, this is the highest peak of European continent, right? It is located where? In Russia, at a height of 18,510 feet, that is 5,642 meters. Apart from this, remember, Tejbir Singh from Punjab, and he is from Punjab state of India. Remember, he also became the youngest Sikh to reach Mount Everest base camp in Nepal, that is at a height of 5,364 meters last year in April 2024. Take a note of this. Next is
Ministry of Youth Affairs and Sports and DIC. DIC is your Digital India Corporation. They have signed an MOU to develop My Bharat 2.0 platform. This will be developed under or with the help of MEITY, as this DIC, that is Digital India Corporation, comes under MEITY, and this will be developed to upgrade the My Bharat platform, and the updated version of this My Bharat 2.0 platform will be launched. This upgrade will enhance the user experience, accessibility and technical features. Also, remember this My Bharat platform, this is a digital platform that has been designed by the Department of Youth Affairs and Sports and in collaboration with DIC here. This was the first version was launched on 31st of October 2023. This platform provides an institutional framework to engage and mobilize the India's youth in structured and impactful manner. And this 2.0 version, this will be an updated version that will provide enhanced feature such as in this 2.0 a modular architecture will be provided that will ensure scalability and flexibility. Also, it will be fully functional mobile application will be provided here for both Android as well as iOS, and AI features will also be incorporated here. Next is government has begun nationwide testing of real-time disaster alert system via mobile phones. What is this real-time disaster alert system? Real-time means in real times, right? Or we can say at the time the disaster is there, at that time itself the information / warning will be provided to the individuals using the mobile phones, right? It is Department of Telecommunication that comes under the Ministry of Communication. They have collaborated with National Disaster Management Authority under the Ministry of Home Affairs that has started the nationwide testing of this new indigenous cell broadcaster disaster alert system that will provide timely information to the citizens, right? This alert system is being tested as a part of broader initiative that will enhance the real-time providing of the information such as your critical alerts during emergencies such as your earthquakes, tsunamis, lightning strike, industrial hazards, etc. If you see Japan, such technology is already existing there, and we know that Japan is prone to earthquakes and tsunamis, right? So the people there, the citizens of Japan, they get alert on their mobile phone when such disaster is about to happen. So warning system is provided to them on their mobile phone itself so that people can move to the safe areas. Similarly, in India, such type of system will be launched and it will be tested nationwide recent now. Next is Adani Green. Adani Green Energy. They have surpassed 15,000 megawatt renewable energy capacity. Right? They have commissioned 1,011.5 megawatt of power projects in Khandwa, Gujarat, and this has pushed their total operational capacity beyond 15,000 megawatt mark to reach the 15,539.9 megawatt. Right? And this coincides with their 10-year anniversary in India's renewable energy sector. And with this, Adani Green Energy Limited, they have become the first company in the renewable energy sector that have crossed 15,000 megawatt renewable energy mark, or we can say this is equal to 15 gigawatt. Right? This is the installed capacity. Now their target is to achieve 50 gigawatt, that is 50,000 megawatt by 2030. This is their next target. Next is international affairs, students. Global Unicorn Index has been released. What is a unicorn? Unicorn is a company that has a market cap of $1 billion, right? So this Global Unicorn Index was released. This was taught by USA, and India ranked third here in this index with a total of 67 unicorns. This Global Unicorn Index is released by Huron Research Institute, right? They have released this Global Unicorn Index, and this is the 7th edition of this index that has been released. Here let me show you the ranking. First, USA on first position with 758 unicorns. Second, China with 343 unicorns. Third, India with 64. Then UK. Then Germany. Right? Take a note of this. And this index, this lists a total of 1,523 unicorns, and this shows an increase of 5% compared to 2024. And the total valuation of these 1,523 unicorns, they have reached a staggering $5.6 trillion. Apart from this, remember, if we talk about some companies, for example, the biggest unicorn in the world is SpaceX with 350
billion valuation. Then second is OpenAI. We know this OpenAI launched ChatGPT, and with their rise, we are seeing they have increased their valuation tremendously to $300 billion. Then ByteDance with $300 billion on second position. So these two are sharing the second position. Hence, fourth position is of XAI, that was earlier known as Twitter, stands at $115 billion. Right, and now on fifth is Ant Group, that is with $87 billion. Correct, and these are the respective companies that you can see here. Moving on. Next, one more thing. If I'm asking about the cities, right, world's unicorn capital, world's unicorn capital, right, it is retained by which? It is by San Francisco, right, with 199 unicorn from there. Second is New York, then is Beijing, China. Bengaluru stands at 7th position, and Mumbai stands at 22nd position. Correct. So coming back, this index is ranking the world's unicorns, that is defined as the startup with a capital market cap of $1 billion. This index has been tracking unicorns since 2017, and data of this index covers the period from January 2024 to January 2025. Next is Global Satellite Development 2025. USA is leading here with 8,530 satellites that have been deployed. India stands at 7th position with 136 satellites that have been deployed. Right, this data, let's see. Right, this is the latest data from the satellite tracking website Orbiting right now. Right, that how many satellites are orbiting the Earth as of 29th of June 2025. There are approximately 12,952 active objects that are orbiting the Earth. Out of these, 145 satellites were launched this year alone, that is in 2025. Right, so far these satellites are deployed around Earth, including geostationary orbit, medium Earth orbit, and low Earth orbit. In this, if we see, USA stands at the first position with 8,530 satellites, right, as of November 2024. And USA, question can be asked, which is the country that has emerged as the country with the highest number of satellites across the world? It is USA. Then Russia stands at second position with 1,559 satellites in the Earth's orbit, and India here stands at the 7th position with 136 satellites. Right, take a note of this, students. Then on second position is Russia. Then China stands at on third position with 906 satellites in Earth's orbit. Then comes your UK, then comes your Japan, then France, and then on 7th is our India. Moving on, next is 2025 Bonn Climate Change Conference was held from 16th of June to 26th of June. So this is the 62nd session of the subsidiary bodies of the United Nations Framework on Convention on Climate Change, right, that is SB26, also known as the 2025 Bonn Climate Change Conference, that was held from 16th to 26th of June at the World Conference Center Bonn, that is in Bonn, Germany. Right, this is a 11-day long conference that brought together over 5,000 delegates and stakeholders from wide range from various countries that will be discussing on wide range of issues that includes your mobilization of the finance so that we can tackle the climate change. Right, take a note of this. So during this conference, discussions were held on the global goal of adaptation. This aims to identify a common goal on adaptation, just like limiting surface temperatures below 1.5 degrees Celsius, which is a global goal on meeting the greenhouse gas emissions. Correct, take a note of this. If I talk to you about UNFCCC, who is the executive secretary here? Simon Stell of Granda, headquartered in Bonn, Germany, established in 1992. Moving on, students, next is Suriname became the first Amazon nation to earn the WHO malaria-free certification. Take a note of this, students. Directly question can be asked, which is the first Amazon nation to earn this WHO malaria-free certification. Right, this was given by World Health Organization. So Suriname has become the first Amazon nation where malaria-free. Malaria is caused by the mosquito bite. Right, apart from this, including Suriname, 46 countries and 1 territory have been certified as malaria-free by WHO till date. Correct, take a note of this.
And this certification of malaria elimination is granted by WHO when a country has proven beyond reasonable doubt that the chain of indigenization of the transmission of the malaria, right, there is no malaria in that area for the last 3 consecutive years. Hence this certification is provided, and latest is Suriname that was granted with this certification. Next is banking and finance. Slice, they became the, or they have launched the UPI credit card that opens AI's first UPI powered bank branch, right? So Slice is a platform that used to provide the loans, right? And they are also operating in the UPI segment. So Bengaluru, Karnataka based Slice, this is a leading fintech company, and they has launched the Slice UPI credit card, and they have opened India's first UPI powered bank branch in Koramangala, Bengaluru, Karnataka. Correct, take a note of this. And this initiative is following the Slice merger with Guwahati, Assam based Northeast Small Finance Bank. This aims to transform the credit access and banking service in India. And this newly launched Slice UPI credit card, it will be RuPay based, right? And there will be zero joining fees as well as zero annual fees here. It will also offer up to 3% cashback on all the spending and allow the customers to split any transaction into 3 interest-free monthly installments. This is also an interesting feature. Then next is economy and business. RBI data has been released, and over 72% growth in India's overseas financial assets driven by investment, currency and deposits and reserve assets. So recently Mumbai, Maharashtra based RBI, they have released the India's international investment position data, IIP data. According to them, over 72% of the total growth in India's foreign financial assets during FY25 was mainly driven by the higher overseas direct investment, currency deposits and reserve assets. Also, these reserve assets, the further revealed data revealed that these reserve assets alone accounted for over 54% of increase in India's residents over overseas financial assets. The data showed that the net claims of the non-residents declined by $31.2 billion during the FY25, and as per the data, the net claims of the non-residents of India declined by $34.2 billion during the fourth quarter of FY25 and stood at $330 billion by March 31. Correct? Take a note of this. Apart from this, the data also highlighted that the ratio of India's international financial assets to the international financial liabilities improved from 74.1% to 77.5%. Right? This is indicating a stronger external financial position for our country. Next, if we talk about RBI, we all know who is the governor of RBI, students. Sanjay Malhotra, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Moving on. Next, students, Jumbo Tail. It became the 5th unicorn of 2025 with $120 million recent funding round. This Jumbo Tail, this is Bengaluru, Karnataka based India's leading B2B, that is business to business e-commerce platform, right? This is for food and grocery. For food and grocery. Correct? And they have raised $120 million, that is close to 1028 crore rupees in the Series D funding round. This round was led by SC Ventures. Right? Let me show you. This was a 1028 crore round. That is the Series D funding round led by SC Ventures, the innovation and investment arm of UK-based Standard Chartered PLC. Take a note of this, very important. And with this, Jumbo Tail, they became the 5th Indian startup to achieve the unicorn status. After Netradin first, JustPay second, Porter third, Drool's Pet Food fourth, and now your Jumbo Tail Technologies Private Limited, that is a B2B e-commerce and retail platform for food and grocery. Next is Setshore and Dhruva Space. They have signed an MOU for EOAAS. What is EOAAS? It is your Earth Observation as a Service solution. What this will do is, Earth Observation as a Service solution means they will be compiling the data that will be received to them through the satellites, and they will be giving a meaningful analysis of the data so that that output can be used by various organizations. One such example can be your farmers, right? They will be using this meaningful data through second companies or by various companies that will be providing them with the data so that they can increase their farming output and do the
timely farming, right? They will be provided with the weather data, rainfall pattern and everything, correct? So with this you will be seeing improvement, and they will be delivering this earth observation as a service solution, correct? So Setshore Analysis Private Limited, they have signed this MOU with Dhruva Space Private Limited for this data. They will be covering satellite development, launch services, ground infrastructure and customized data analytics for the industries that will be providing them with meaningful data. Also remember Dhruva Space, they have set up a 2,80,000 square feet of spacecraft manufacturing facility in Hyderabad, Telangana. Next is appointments and resignation. Student, ACC has appointed Parag Jain as their new chief of RAW. RAW is your research and analysis wing. This is the external agency, external intelligence agency of India. He will be succeeding Ravi Sinha, right, who is set to retire on 30th of June 2025. He is a 1989 batch IPS officer. Apart from this, remember ACC has also extended the CBDT chairman Ravi Agarwal's tenure till June 2026. Next is science and technology. Students, DRDO has unveiled the India's first indigenous photonic radar for advanced stealth detection, right? What is this? Why this is important is, students, we know that in today's world there are 5th and 6th generation aircrafts also which are stealth. That means the normal radar, they will not be able to track these aircrafts that are stealth aircraft. So what can be done? How we can enhance the security of our air force? How can we enhance the security of India? So DRDO, they have unveiled the India's first indigenous photonic radar that will be detecting the advanced stealth aircrafts, right? Take a note of this, and this is the important why this is India's first indigenously built, that is made in India built photonic radar. This is a milestone in India's air defense technology. This will be using ultra high resolution stealth detection and immunity to the electronic jamming. The radar is expected to undergo trials to validate their performance, and this photonic radar, it will replace the traditional microwave radio frequency systems by using the light based technologies such as lasers and optical fibers. Very important, students. This will be an enhanced resolution, multi-platform integration will be there, stealth detection will be there, right? And these systems will be deployed along the line of actual control and line of control. Can you tell me what is the name of the line boundary between India and Pakistan, India and China? Name it. This is your homework. Next is researchers has built the world's first silicon free computer using the 2D material. I repeat, researchers at Pennsylvania, USA based Pennsylvania State University of Penn State, they have built a computer from scratch without silicon. This is a milestone that shows the possibility to replace the material that fueled the bulk of technology advancement by making the device smaller and much faster. The computer was built at a nanofabrication unit at the Penn State in USA, and these researchers, they demonstrated the successful working of this complementary metal oxide semiconductor computer made using the 2D materials which are paper thin and at the nano level, that is very thin, right? So this is another interesting development we are seeing, right? And this CMOS computer, they are widely used in designing electronic circuits including microprocessors, microcontrollers, the microchips and the digital logic circuits. Next is sports, students. US Open we are talking about, and Ayush Sethi has won the men's single title and Tanvi Sharma has won the women's single title as the runner-up. Correct. So Ayush Sethi, world's number 34, clinched his maiden Badminton World Federation World Tour title by defeating the Canada's Brian Young, who is the world number 33, in the men's single final at the US Open Badminton tournament. Take a note of this, very important, students. Moving on. Next is books and authors, students. We are talking about Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami has released Lalit Shaurya's book Swasthya Ke Prahari. I repeat, Swasthya Ke Prahari. This book has been authored by Lalit Shaurya, right? He is a children's literature writer and he has recently authored this book. This book talks about, or basically this book aims to creatively introduce children and wider audience to health issues and empower them to becoming the guardians of health.
Next important is National Doctors Day, observed on 1st of July to acknowledge and celebrate the valuable service that doctors and healthcare professionals provide in safeguarding the public health and society. This day also commemorates the birth and death anniversary of Bharat Ratna Dr. B.C. Roy, that is Dr. Bidhan Chandran Roy, who was a distinguished physician and a second Chief Minister of Bengal. Also, there is a theme here, students. Behind the mask, who heals the healer? This is the theme here. Next is GST Tax Day, observed on 1st of July, that is Goods and Service Tax Day, GST Day, right? This Goods and Service GST, it is an indirect tax. First thing that you need to remember. This was implemented when on 1st of July 2017, and this is the 8th observance of this day. There is a theme here, GST simplifying taxes, empowering citizens. Next is National Chartered Accountant Day, that is your National CA Day, observed on 1st of July. Take a note of this, students, right? This day is observed basically to honor the contributions and professionalism of chartered accountants who play a crucial role in ensuring the financial transparency and economic growth in India. And this year it was the 77th formation of ICAI, correct? Also, as I say, this day is observed to commemorate the founding of this ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India, that was established in 1949. And this ICAI, this is a statutory body that comes under the Ministry of Corporate Affairs, that is responsible for regulating the education, training, examination and professional conduct of the CAs in India. If we talk about ICAI, who is the president of ICAI? Charanjot Singh Nanda, headquartered in New Delhi, established in 1949. Then is your state news, Raj Bhavan Anadhan scheme, right? It was launched in Goa recently, and Kerala's governor Rajendra Vishwanath Arlekar, right? He has launched this scheme, Raj Bhavan Anandan scheme, in the presence of the Goa's governor P.S. Sridharan Pillai and Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant. Right here, a check worth 1,20,000 rupees was handed over to the Goa Street Providence Organization, while an assistance of 20,000 rupees each was provided to approximately 40 patients during this event. This financial assistance from the governor's discretionary fund is facilitated by Goa's Chief Minister Pramod Sawant, that has benefited more than 40 patients undergoing cancer treatment and dialysis. So these are your important current affairs for the day, students. Now let's move to the revision part. Who has become the first Indian to be awarded the Fred Darrington Sandmasters Award for Excellence in Art and Culture by the Mayor of Weymouth, Clerk John Orrell. So who became the first Indian? Sudarshan Patnaik. Correct? Take a note of this. And became the first Indian. He is a Padma Shri awardee also. Take a note of this. Next is who received the National Maritime Varuna Award, that is the highest individual honor in India's maritime sector during the 62nd National Maritime Day celebration in April 2025. So Captain Rajesh Unni has received this National Maritime Varuna Award, that is the highest individual honor in India's maritime sector. This was during the 62nd National Maritime Day that was observed on 5th of April. Next, in April, Global Finance magazine recognized which among the following as the most innovative financial institution globally in its 2025 innovators list. It is A, B, C, all three of them. That is HSBC Holding PLC, Standard Chartered PLC and Reserve Bank of India. So option 5 is absolutely right. Next, which company has been recognized as the Steel Sustainability Champion by World Steel Association for the 8th consecutive year since 2018? It is Tata Steel Limited. Next, which state's police has won the Scotch Award at the national level in the police and safety category for their investigation, prosecution and conviction protocol in April 2025? So which is that state's police? It is Uttar Pradesh State Police that has won this Scotch Award in which category? In police and safety category. Next, the 11th edition of the annual Breakthrough Prize, also known as the Oscars of Science, were announced by the Breakthrough Prize Foundation in California, USA in April. Identify the Indian university that was recognized as a part of the international team awarded the prize. So it is University of Jammu. Take a note of this.
Moving on, next is the 6th edition of the National Highways Excellence Award, that is NHEA, organized by the Ministry of Road Transport and Highways, was held in New Delhi. So edition, that is the 6th edition. Next question, the location, that was held in New Delhi, and here this award was given in 5 different categories. Question asked is which among the following is not among the categories in the National Highways Excellence Award. So among the following, if we look at here, the Blue Revolution is not the category, and 5th also remember here, that is excellence in project management in PPP, that is public private partnership category, right? So all 4 of them are the categories, but this here Blue Revolution is not the category. Next is identify the former England cricketer who has been awarded a knighthood conferred by the British monarchy or Commonwealth nations for his service to cricket. So Sir James Michael Anderson, he was awarded with the knighthood, right? Take a note of this, and he received this award as a part of the Prime Minister of UK's Rishi Sunak's resignation honor list. Next is the 2025 list of the young global leaders released by the World Economic Forum in April included 7 Indians out of the total of 116 leaders under the age of 40 who have significantly contributed to various fields including business, politics, science and the art. Question asked is which of the following Indian is not featured in this particular list. If we see here, Vijay Shekhar Sharma, he is the CEO of Paytm. He is not among the or included in this list. Rest all are there in this list. Next, 5 Indian Armed Force personnel were honored with the McGregor Memorial Award or McGregor Memorial Medal for the year 23 and 24. Who among the following was not honored with this medal here? Among the following, if we see who was not honored here with this award, so Colonel Ranveer Kumar Saxena, right? He is among the persons here who was not honored with this McGregor Memorial Medal. Take a note of this. Next, mention the name of the Qatar-based Palestinian photographer who won the World Press Photo of the Year for a image or a photo of a 9-year-old Mohammad Azhar. He is a Gazan boy who lost both his arms in an Israeli strike in Gaza in March 2024, and for his photo he won the 2025 World Press Photo of the Year. Question asked is what is his name? He will be Samar Abu Alof. Next, the 2025 edition of the Wisden Cricketers Almanac revealed its 5 Wisden Cricketers of the Year, right? Question asked is identify the cricketer who is not on this list among the 5 Wisden cricketers. Among the following, if we see, Harry Brook is not on this list, right? Next is and here Jamie Smith is there, right? Gus Atkinson is there, Sophie is there, Daniel Warr is there, Dan Worrell is there, and Liam Dawson, right? So these are the 5 Wisden cricketers. Next, which of the following recipient is not currently matched with respect to their category in the 36th Goldman Environmental Prize 2025 as announced by the Goldman Environmental Foundation? If we look at here, Laurel Allen, forest conservation is the not right option here. If we see Laurel Allen, she is not for forest conservation but for pollution and waste. Now all the options are rightly mentioned. Next, students, is our homework section. First is tell me I am circular. This is a coffee table book launched by which organization? Then second question, recently India's largest international cruise tourism was launched where? Third question, tell me recently where was India's first swap kidney transplant took place? Fourth question, tell me recently where was? Name the institute that has topped the India's Times Higher Education Asia ranking for 2025. So these are your 4 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को में हम 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम भूपेंद्र यादव जी की बात करेंगे। इन्होंने MEE रिपोर्ट को रिलीज किया है, जो कि है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2020 से 2025 की ये रिपोर्ट है, जहाँ पे 438 प्रोटेक्टेड एरियाज, जहाँ पर आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम उनके प्रोटेक्शन पे कितना काम किया गया उसको डिस्कस करेंगे। देन तेजबीर सिंह ये वर्ल्ड के यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने क्लाइम किया समिट ऑफ माउंट एल्ब्रस, जो कि रशिया में है एंड ये हाईएस्ट पीक है इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने एंड DIC के द्वारा MOU साइन किया गया टू डेवलप माई भारत प्लेटफॉर्म 2.0। ये सभी चीज़ें एंड मैनी मोर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स आपको सीखने को मिलेगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हम सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। भूपेंद्र यादव जी इन्होंने रिलीज किया ये MEE रिपोर्ट 2020 से 25 तक फॉर 438 प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। राइट, MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ये बताता है कि जो ये नेशनल पार्क्स हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके ऊपर, इनके कंजर्वेशन के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है एंड किस स्टेट में सबसे बेहतरीन काम हमें देखने को मिल रहा है। राइट, ये जो रिपोर्ट है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रिपेयर की गई थी एंड इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इवेंट जो था इंडिया कंजर्वेशन कन्वेंशन। राइट, ये कब हुई थी? 2025 में हुई। कहाँ पर हुई? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई, जो कि देहरादून में है इन उत्तराखंड। एंड केरला ने यहाँ पे टॉप पोजीशन सिक्योर करी है विद 76.22% एंड यहाँ पर इनको वेरी गुड का ग्रेड दिया गया। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है फिर चंडीगढ़। राइट, चंडीगढ़ ने टॉप किया अमंग द यूनियन टेरिटरीज एंड यहीं पे अगर हम देखें, इसी के अलावा एक याद रखेंगे 2 चीज़, एराविकुलम जो कि नेशनल पार्क है केरला में एंड दचिगम जो कि नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, इन दोनों ने हाईएस्ट स्कोर अचीव किया ऑफ 92.97% यहाँ पर ईच। एक और चीज़, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर कौन रहेंगे? वीरेंद्र R तिवारी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? देहरादून उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तेजबीर सिंह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड के यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एल्ब्रस को। कितने साल के हैं? ये 6 साल 9 महीने के हैं। राइट, एंड ये यंगेस्ट बन गए इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जो कि रशिया में लोकेटेड है। 18,510 फीट है इसकी हाइट एंड अगर मीटर्स में बात करें 5,642 मीटर्स इसकी हाइट रहेगी। राइट, लो ऑक्सीजन ये ट्रैक रहती है एंड स्टिल इन्होंने यहाँ इसको अचीव किया। -10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। इसी के अलावा तेजबीर सिंह ये पंजाब से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने यहाँ पर याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में जो नेपाल में है 5,364 मीटर, वहाँ पे भी इन्होंने क्लाइम किया था एंड यंगेस्ट सिख बन गए थे फ्रॉम पंजाब जिन्होंने ये फीट को अचीव किया था। एंड अगस्त 2024 में ये यंगेस्ट एशियन भी बने थे जिन्होंने स्केल किया माउंट किलिमंजारो को, जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एंड DIC है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इन दोनों ने अभी एक MOU साइन किया ताकि माय भारत 2.0 प्लेटफॉर्म को बनाया जा सके। इससे पहले माय भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, अब ये इसका अपडेटेड वर्जन है। अगर मैं माय भारत प्लेटफॉर्म की बात करूं, वो एक डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद DIC। इसको 31
अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था एंड ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को टू एंगेज एंड मोबिलाइज इंडियाज यूथ इन स्ट्रक्चर्ड एंड इम्पैक्टफुल मैनर। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी सेकेंड वर्जन में। iOS एंड एंड्रॉयड की एप्लीकेशन आ गई हैं फुल्ली फंक्शनल एंड AI ड्रिवन फीचर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने बिगिन किया नेशन वाइड टेस्टिंग ऑफ रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को वाया मोबाइल फोन्स। राइट, मतलब देखो जैसे जापान का एग्जांपल लेके चलते हैं। जापान में अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे सुनामी की बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। राइट, अर्थ प्रोन एरिया है, वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो वहाँ पर जब भी ऐसे अर्थक्वेक आता है तो सरकार के द्वारा मोबाइल फोन्स के थ्रू लोगों को वार्निंग दी जाती है ताकि वो सेफ एरिया में पहुँच सके एंड उस डिज़ास्टर से बच सके। अगर वो फ्लड आ रही है, स्विम अप की सुनामी आ रही है तो उससे वो बच सकें। सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम को रियल टाइम मतलब एकदम इमीडिएट सिस्टम, राइट, इमीडिएट रिस्पांस जाएगा, इमीडिएट वार्निंग लोगों तक पहुंचाई जा सके, ऐसे डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है यूजिंग मोबाइल फोन्स। राइट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने कोलैबोरेट किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, टू स्टार्ट अ नेशन वाइड टेस्टिंग ऑफ दीज न्यू इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को, जो कि टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा सिटीजन्स को। अर्थक्वेक्स, सुनामीज, लाइटनिंग स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल हजार्ड, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा एंड मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी को मिला के। नेक्स्ट आ जाते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने सरपास किया 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, मतलब 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का टारगेट ये अचीव कर चुके हैं। इन्होंने अभी 1011.5 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया खावड़ा गुजरात में, जिससे इनका टारगेट बढ़ गया है टू 15,539.9 मेगावाट एंड ये पहली इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है जिन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है एंड 15 गीगावाट को क्रॉस किया है। 15 गीगावाट बोलो या 15,000 मेगावाट बोलो। अब इनका टारगेट है 2030 तक इन्होंने 50 गीगावाट ऑफ टारगेट को अचीव करना, मतलब 50,000 मेगावाट जनरेट करना है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे जहाँ पे यूएसए ने टॉप किया है। ये डाटा ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है एंड इनके द्वारा ये 7th एडिशन लॉन्च किया गया ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का, जहाँ पे इंडिया ने सिक्योर करा 3rd रैंक ग्लोबली विद अ टोटल ऑफ 64 यूनिकॉर्न्स। यूएसए ने टॉप किया विद 759 यूनिकॉर्न्स, चाइना सेकंड पे 343, थर्ड पे इंडिया विद 64, देन यूके एंड देन जर्मनी। यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप होता है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। राइट, एंड द डाटा इन द इंडेक्स कवर्स पीरियड फ्रॉम जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक। यहीं पे एक और चीज़ देखें तो यूनिकॉर्न कंपनीज की स्पेसएक्स सबसे बड़ी यूनिकॉर्न है विद $350 बिलियन वैल्यूएशन। देन ओपन एआई सेकेंड पे जिन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, ये $300 बिलियन पे पहुंच गई है। ये अलग में एक अचीवमेंट है, इतने कम टाइम में ये यहाँ पे $300 बिलियन पहुंचते हुए दिखे। देन सेकेंड पोजीशन शेयर की जाती है बाइडेंस के द्वारा, इनका ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे वैल्यूएशन है। देन फोर्थ पर आ जाता है एक्सएआई जो कि पहले ट्विटर होता था एंड फिफ्थ पे एंड ग्रो। अगर यहीं पे मैं बात करूँ वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल, कौन सी सिटी है वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न कैपिटल, तो वो आ जाती है सैन फ्रांसिस्को। 199 यूनिकॉर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका 7th पोजीशन पर आ जाता है। मुंबई महाराष्ट्र 22nd पोजीशन पर आ जाता है इन दिस इंडेक्स एंड गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम हरियाणा 27th पोजीशन पर। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल सैटेलाइट डेवलपमेंट 2025 का हम डाटा देख रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि किस कंट्री के द्वारा सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं सबसे ज़्यादा स्पेस में। तो देखें तो यूएसए लीड कर रहा है विद 8,530 सैटेलाइट्स, जहां पे इंडिया की पोजीशन आ जाती है 136। तो यूएसए टॉप पर है विद 8530 सैटेलाइट्स। रशिया सेकेंड पे आ जाता है 1559 सैटेलाइट्स। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है चाइना। चाइना की कितनी सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती हैं, तो चाइना यहाँ पर आ जाता है थर्ड पोजीशन पे विद अ टोटल ऑफ 906 सैटेलाइट्स। चौथे पे यूके, पांचवें पे जापान, छठे पे फ्रांस, फिर सातवें पे हमारा इंडिया। नेक्स्ट 2025 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस देखने को मिली 16 जून से 26 जून तक ये हमें देखने को मिली। कहाँ पर बॉन, कहाँ पर है जर्मनी में, जर्मनी में ये हमें देखने को मिली। राइट, ये है SB
26, जिसको हम 2025 की बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये आपका 62nd सेशन था ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो इवेंट था बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 16 से 26 जून तक हुआ, राइट, एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन, जो कि जर्मनी में है। ये 11 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स एंड स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस हुई जैसे ग्लोबल गोल ऑफ अडेप्टेशन को अपनाने के लिए, राइट। जो एम क्या है, बेसिकली कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करके ऑन अडेप्टेशन उसको अपनाया जा सके, जैसे हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट करने का टारगेट अपनाया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर सूरीनेम। ये वो पहली अमेजोन नेशन बन गया जिन्होंने WHO का मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन को अपनाया या फिर इनको सम्मानित किया गया। मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है एंड 3 साल लगातार किसी कंट्री में अगर किसी जगह पे यहाँ पे हमें मलेरिया नहीं देखने को मिलता तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाता है। एंड अभी सूरीनेम को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया इस सर्टिफिकेशन से। टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। स्लाइस, ये आपकी एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड। इन्होंने UPI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, राइट। ये रुपए बेस्ड रहेगा। इसमें ज्वाइनिंग फीस एंड आपकी रिन्यूअल फीस हमें नहीं देखने को मिलती, 0 रहेगी। एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप यहाँ पे 3%, इसमें आपको 3% कैशबैक भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप अपनी पेमेंट को 3 इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं थ्रू दिस कार्ड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे। फिर आ जाते हैं बैंकिंग, इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। RBI डाटा रिलीज किया गया जो कि इंडिया के ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करता है, जो बताता है कि 72% ग्रोथ हमें देखने को मिली इन इंडियाज ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट, करेंसी एंड डिपॉजिट्स एंड रिजर्व एसेट्स। मतलब बाहर इंडियंस ने अपना जो इन्वेस्टमेंट की है, राइट, जो एसेट्स हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखे हैं कहीं ना कहीं। इवन अगर हम देखें जो लाइबिलिटीज़ हैं एंड आपका जो एसेट्स हैं उनका अगर हम रेशो देखें वो भी हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखा है, राइट। या फिर हम बोले इंडिया की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स हैं एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, अगर हम उसका रेशो देखें 74.1% से बढ़ के 77.5% हो गया। मतलब जो हमारे एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं इंटरनेशनल बाहर इंडियंस के, वो ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। इससे हमारे इंडिया की जो पोजीशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, वो और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जंबो टेल। ये इंडिया का 5वां यूनिकॉर्न बन गया है। 5वां यूनिकॉर्न मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर गई हो। ये 2025 में यूनिकॉर्न स्टेटस इन्होंने अचीव किया। एंड सीरीज डी फंडिंग राउंड अभी हमें देखने को मिला था जहां पे इन्होंने $120 मिलियन रेज करे थ्रू SC वेंचर्स के थ्रू, राइट। एंड $120 मिलियन क्लोज टू 1028 करोड़ होते हैं, राइट, इन्होंने रेज किए सीरीज डी फंडिंग राउंड में, लेड बाय SC वेंचर्स, जो एक इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट आर्म है UK बेस्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC का। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड जैसा हमने देखा ये 5वां इंडियन स्टार्टअप बन गया जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव किया आफ्टर नेट्राडेन, जेस्पे, पोर्टर एंड रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स सेट श्योर एंड ध्रुवा स्पेस। इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एज अ सर्विस सॉल्यूशन। ये क्या होगा, सैटेलाइट की मदद से डाटा आएगा, उस डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, मीनिंगफुल आउटपुट निकाला जाएगा, राइट, जो कि कंपनीज को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि फर्दर इनको आगे यूज में ला सकें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलें फार्मर्स, उनको ये कंपनीज डाटा प्रोवाइड कराएंगी कब उनको फार्मर्स को फार्मिंग करनी है, कब बीज बोना है, कब उनको उसको सिंचाई करनी है, कौन से टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कब रेनफॉल होगी कब नहीं होगी, क्या वेदर पैटर्न्स आएंगे, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी, राइट। इससे एंड टू एंड सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट डेवलपमेंट के ऊपर, लॉन्च सर्विस के ऊपर, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टमाइज्ड डाटा मिलेगा फॉर एनालिसिस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। ACC ने अपॉइंट किया पराग जैन को एज देयर न्यू चीफ ऑफ रॉ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की एंड ये सक्सीड करेंगे रवि सिन्हा को, ठीक है। एंड ये 2 साल के लिए इस पोजीशन पे आ गए हैं। एक और चीज यहाँ पर ACC ने एक्सटेंड करा CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का टेन्योर एज कब तक, जून
2026 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। डीआरडीओ ने अनवेल किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। ये फोटोनिक रडार क्यों बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स? ये एडवांस स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए। आज के टाइम हम देखते हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोवेव रडार की जो होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस फाइटर जेट्स को। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, क्योंकि हमें अपनी एयरफोर्स की सिक्योरिटी करनी है, हमें उसका जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए जो इंडिया का एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट किया जा रहा है इन फोटोनिक रडार से, जिससे इन स्टेल्थ जेट्स को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। राइट, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। इससे हमारी जो बॉर्डर एरियाज है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में देखने को मिल सकते हैं। एलओसीज एंड एलएसी के अराउंड हम यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को डिप्लॉय करेंगे ताकि हमारा एयर जो बेस है, एयरफोर्स का एयर स्पेस कह सकें, वो और ज़्यादा सेफ होता हुआ हमें दिखेगा। क्योंकि जब भी ये फाइटर जेट्स आएंगे, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, हम इनको इस फोटोनिक रडार की मदद से डिटेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? एंड इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट। सो कमिंग बैक, डीआरडीओ के द्वारा ये पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार्स को टेस्ट किया जाएगा। इंडिजीनियस मतलब मेक इन इंडिया है, इंडिया में इनको बनाया गया है फॉर एडवांस स्टेल्थ डिटेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स ने बिल्ड किया वर्ल्ड का पहला सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर यूजिंग द 2D मटेरियल। क्यों इंटरेस्टिंग है ये? क्योंकि बहुत पतला है स्टूडेंट्स ये, राइट, एकदम पतला है। नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में इसको बनाया गया है, राइट, 2D मटेरियल से बिल्कुल पेपर थिन है एंड नैनो लेवल्स का इसको बनाया गया है। इससे होगा क्या? ये यूज में आ सकेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंक्लूडिंग माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो चिप्स, आपके लॉजिक सर्किट्स एंड मैनी मोर, राइट। एंड द कंप्यूटर हियर इट वाज बिल्ड एट nano fabrication unit. Correct. So coming back, researchers from Pennsylvania स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, जो कि पेन स्टेट है, इन्होंने बिल्ड किया एक कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच विदाउट सिलिकॉन। ये एक माइलस्टोन है शोइंग अ पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस द मटेरियल दैट फ्यूल द बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, राइट। तो ये कंप्यूटर बनाया गया, इस सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर बनाया गया 2D मटेरियल से, जो कि बहुत पतला है एंड ये वर्ल्ड का पहला कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर रहेगा। 2D मटेरियल से इसको बनाया गया, तो काफी ज्यादा पतला है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। यूएस ओपन की हम बात कर रहे हैं। आयुष सेठी इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एंड तन्वी शर्मा यहाँ पर रनर अप रहे, राइट। आयुष सेठी जो कि वर्ल्ड के नंबर 34 है, इन्होंने कनाडा के ब्रायन यंग को जो कि वर्ल्ड के नंबर 33 है उनको हरा दिया टू विन द मेन सिंगल टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रहरी, राइट। ये बुक लॉन्च ऑथर की गई है ललित शौर्य के द्वारा एंड इस बुक को रिलीज किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर स्टूडेंट्स। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में एंड इनकी इनवैल्यूएबल सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये डे बेसिकली बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी भी है आपकी डॉक्टर BC रॉय, बिधन चंद्र रॉय की, जो कि एक फिजिशियन एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इसकी एक थीम भी रहेगी स्टूडेंट्स, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। ये यहाँ पर आपकी थीम रहेगी, तो इसको मार्क जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स GST डे। GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है एंड 2017 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को, राइट। इसकी एक थीम भी रहेगी GST सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। 8वां ऑब्जर्वेंस हमने इसका ऑब्जर्व किया एंड टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए GST को लॉन्च किया गया था। फिर आ जाते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। CAs के बारे में जो कि होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है दैट विल इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। 77वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया ऑफ ICAI, राइट। क्यों? 1949 में ICAI को इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये नेशनल CA डे भी ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। राजभवन अनाथन स्कीम ये लॉन्च किया गई लॉन्च की गई गोवा में एंड केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ PS श्रीधरन पिल्लाई गवर्नर ऑफ गोवा एंड
आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, इनकी प्रेजेंस में इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के अंडर बेसिकली 1,20,000 का चेक दिया जाएगा एक तो गोवा स्टेट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड 25,000 ईच प्रोवाइड किए जाएंगे टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स जो कि कैंसर गोइंग या फिर अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको ये अमाउंट दिया जाएगा ताकि उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में हेल्पफुल रहेगा, एंड देन होमवर्क पार्ट पे चलेंगे। आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल सिक्योर करे अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन अप्रैल एट द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑलिव क्राउन अवार्ड्स, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला। तो ये रहेगा अडानी ग्रुप। फिर आ जाते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर बाय द मेयर ऑफ वेमाउथ क्लर्क जॉन ऑरल। राइट, ये सैंड मास्टर है, काफी फेमस सैंड मास्टर है, ये सुदर्शन पटनायक। राइट, एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रिसीव द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में 62वें नेशनल मैरीटाइम डे के दौरान, जो कि 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। बताओ कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अप्रैल को 62वां नेशनल मैरीटाइम डे। तो किनको अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड से? तो वो है कैप्टन राजेश उन्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया विच अमंग द फॉलोइंग को एज द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली इन इट्स 2025 इनोवेटर्स लिस्ट। तो यहाँ पे तीनों बैंकों को, HSBC होल्डिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को नहीं, तीनों इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, किस कंपनी हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के लिए बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर सिंस 2018? तो वो है टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट पुलिस ने अभी जीता स्कॉच अवार्ड एट द नेशनल लेवल इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन प्रोटोकॉल इन अप्रैल 2025? तो यूपी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड जीता गया, यूपी स्टेट पुलिस के द्वारा स्कॉच अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट, 11वां एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइज हुआ, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। इनको अनाउंस किया गया ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन के द्वारा कैलिफोर्निया यूएसए में। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टीम अवॉर्डेड द प्राइज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू रहेगी। नेक्स्ट, अभी छठा एडिशन ऑफ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड NHE अवार्ड्स देखने को मिले 2023 के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए थे। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको ऑर्गेनाइज कराया गया था। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कैटेगरीज इन द नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड? तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ का पार्ट नहीं रहेगा, बाकी 3 है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर जिनको अभी अवार्ड किया गया नाइटहुड से, किनके द्वारा? ब्रिटिश मोनार्की और कॉमनवेल्थ नेशन के द्वारा फॉर हिज सर्विस टू क्रिकेट। कौन रहेंगे वो? ये हैं किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर? सर जेम्स माइकल एंडरसन को। नेक्स्ट, 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अप्रैल 2025 में, जहां पे 7 इंडियंस को लिस्ट किया गया आउट ऑफ द टोटल ऑफ 116 लीडर्स जो इस लिस्ट में आए बिलो द एज ऑफ 40। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड द आर्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट हियर? तो इनमें से विजय शेखर शर्मा यहाँ पे इस लिस्ट में फीचर नहीं है। नेक्स्ट, इन अप्रैल 5 इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल्स को ऑनर किया गया मैग्रेगर मेमोरियल मेडल से फॉर द ईयर 2023-24। इनमें से किन को ऑनर नहीं किया गया है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हम देखें, इनमें से कर्नल रणवीर कुमार सक्सेना को सम्मानित नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिन्होंने अभी 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। इन्होंने एक फोटो ली मोहम्मद अजौर की, जो कि एक 9 साल का बच्चा है, गाजन बॉय है, गाजा में ये रहता है। इसके दोनों आर्म्स चले गए बिकॉज ऑफ एन इजरायली एयर स्ट्राइक जो कि गाजा में हमें देखने को मिली थी मार्च 2024 में। इनकी फोटो ली जो कि काफ़ी फेमस हो गई, एंड इसके लिए इनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कौन है ये है समर अबू लॉफ। नेक्स्ट, 2025 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, इन्होंने रिवील किया 5 वाइजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, राइट, फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इनमें से वो कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस लिस्ट में से, तो आपके
हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं रहेंगे। कौन ऐड होंगे? डैन वॉरेल एंड लियम डॉसन, राइट। तो ये 5 हो गए। अब हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर है हैरी ब्रूक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट इज नॉट करेंटली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी 36वें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के हिसाब से अनाउंस्ड बाय द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा राइट मैच नहीं है, तो वो है लॉरीन एलन का, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है बल्कि पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 5। फिर आ जाते हैं, नेम द इंडियन एयरपोर्ट जिसने रिसीव किया लेवल 5 एक्रेडिटेशन को अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अप्रैल 2025 में। तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म मेकर जिनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर 24 अप्रैल 2025 को। तो कौन रहेंगे? वो हैं पायल कपाड़िया। एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, ग्लोबल मीडिया में या फिर इंडियन मीडिया को या ग्लोबल मीडिया में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट इज टेल मी आई am circular. This is a coffee table book launched by which organization? Then second question, recently India's largest international cruise tourism was launched where? Third question, tell me recently where was India's first swap kidney transplant took place? Fourth question, tell me recently where was? Name the institute that has topped the India's Times Higher Education Asia ranking for 2025. So these are your 4 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.